So we'll carry on with the redox reactions, and the most important case to explain redox, and most convenient way, the helpful way, is redox in terms of oxidation numbers. Oxidation is gain in oxidation number and reduction is loss in oxidation number. Now what does oxidation number stand for? We'll practice, we'll definitely practice, and we'll find out how to work out and how quickly we can assign the oxidation number on a given element. Simply if we say oxidation number, it is what? It's a numerical value given or assigned only, placed on an element only in compound form. In original form, this oxidation number is 0, genuine form. Mean oxidation number is assigned only when an element reacts with something and it gains a positive oxidation number or a negative oxidation number. That will depend on certain rules and its placement and its nature. A metal or a non-metal or a strong non-metal, more electronegative or less electronegative or whatever. Okay, so oxidation states or oxidation numbers are assigned by using certain rules, and the rules are there. I'll explain them. Suppose I know the oxidation number, I have the rules in the mind, and it's so convenient for me to explain any reaction. For example, it may be magnesium reacting with oxygen and produce magnesium oxide. We know that. Now in terms of oxidation number, it's so convenient to explain if we know the oxidation number, if we can work out. So like magnesium, it is 0, I know the rules, oxygen 0, and here the magnesium gain +2 and oxygen gain -2. For oxidation numbers and oxidation state, you can notice I am placing oxidation charges before the digit, before the numerical value. If it is a charge, if it is an ionic equation we write like this, but oxidation state is written like this, mean numerical or charge before the numerical value. Now I know the oxidation number, I place them so quickly. You can find out magnesium has gain in oxidation number and oxygen has loss in oxidation number. So magnesium is straight away oxidized. The definition says gain in oxidation number. You can look at the redox meter here. Gain in oxidation number, magnesium has climbed 2 steps. And oxygen on the other hand, original form, fall to -2, and quickly I can place that oxygen is basically reduced. So the case is clear. One thing is oxidized and other is reduced. It is oxidized, it's a reducing agent. It is reduced, it's an oxidizing agent. Now, easy it was for me. How you can perform or how quickly you can assign the oxidation number, you need to go through these rules and then some mathematical problems. So quickly you can assign the oxidation number. Look at the rule number 1. It says, you need not to memorize this rule, but you'll find out that in practice you somehow remember them. In original form, I said oxidation number of an element is 0. Meaning in elemental form, oxidation number is 0. What it means? Anywhere you find Cl2, H2, N2, Mg, you find out these are the original form. Like it stays diatomic, it is Cl2, H2, N2, Mg, or even somewhere if it is written normally N. You know, it is somehow elemental form, not a compound form. Prerequisite is what? An element must be in the compound form for an oxidation state. For a status it can update, I am +2, I am +3, I am +4, I have invested electrons. Or I gain electron. Gaining electron is an honor as well. You snatch with the power, the electronegativity. And losing electron is also a tendency, the electropositive character. E is to give electron, because chemical reactions are basically the trade of electrons. Somebody loses the electron to satisfy itself, to gain the last octet complete, or to gain electron just to satisfy the last shell. So in elemental form, the first rule says the oxidation number is 0. Straight away you place 0, whether it is a reactant or product. But I said oxidation number mostly matches valency or group number. Mean if it is a part of a compound, then oxidation number, suppose it is MgCl2. And I quickly need to put in the oxidation numbers. I'll find, okay, magnesium, I look at the periodic table, it is in group 2. It means, I said in most cases it matches valency and you simply put +2 there. And chlorine is in group 7. So oxidation number matches valency, you put it -1 into 2. -1 because genuine, it is 1 chlorine having -1. There are 2 chlorine, so -2.
So straight away we know that +2 and -2 makes 0, because the most important of the fact we know that oxidation numbers, basically sum of oxidation numbers must be equal to 0 for a neutral compound. Remember, overall oxidation number, sum of oxidation state is 0, but for what? For a neutral compound. It may not be, it may be sometime a radical having a charge, a polyatomic ion having a charge, then sum of the oxidation number will not be 0. We'll find, we'll practice that as well. But you find out that oxidation number for a genuine neutral compound is 0. Okay, we'll practice. Let's see. I need to rub now. Duster in my hand. हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पॉज लिया है ना, अब मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ। सही है ना, पार्ट 2 पे बस सही। लेकिन जब कैरी ऑन करेंगे मैं आपको इशारा देता हूँ कि मेरे पास जगह कहाँ पे है, जो मैं जगह बनाऊँ। चार डिजिट वाले ना? हाँ मेरे ख्याल में इसके डब्बे पे कोड्स लिखे होने चाहिए। सेंसर के सामने रखा है, जब इसने तुम बनाया था उसका कोड है पूरा। हाँ ऐसा कुछ किया था उसने, पता नहीं डिस्टर्ब किसी बच्चे ने पंगा लिया, क्या किया। ये रिमोट बड़ा स्लो है। जेन्युइन होता है। नाउ भैया आप थोड़ा सा ना आगे बहुत आ जाते हैं। एक सेकंड। हाँ नहीं पानी आया होगा, पानी। हाँ जी आगे आगे। थोड़ा सा ये पता नहीं क्या है, मुझे संदल अच्छा लगता है। स्टार्ट बहुत अच्छा था आज का, लेकिन आपको स्पीड में कर रहे हैं। अच्छा ये पता है क्या होगा आतिफ, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, उर्दू। ठीक, उर्दू इंग्लिश जो है ना नॉर्मली थोड़ी, लेकिन ये इसमें टाइम लगेगा। मैं स्लो करता हूँ आप, ठीक है ना, मैं स्लो करता हूँ। नहीं स्टार्ट बहुत जबरदस्त था। अच्छा एक बात याद रखें, अब बच्चों के पास तो रिकॉर्डेड होता है ना, वो रिपीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आस्ता आस्ता आदत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आदत चाहिए। मैंने बताया ना कि टीचर्स, मैं टिपिकल टीचर हूँ। और टिपिकल टीचर क्या होते हैं, पहले जाके बच्चे रोले, ड्रामे लगाए, कुछ किया, एंजॉय किया, फिर पढ़ाया। सही, क्रिटिकली किसी को एनालाइज किया, क्वेश्चन पूछा। मैं क्वेश्चन पूछूँ तो जिससे पूछता हूँ उसी से पूछता हूँ। अगर कुछ दूसरे बीच में बोल जाए, मैं उससे टफ पूछता हूँ। मैं कहता हूँ तुमने मेरा विक्टिम स्पॉइल किया है। अच्छा, वो टिपिकल इनबिल्ट टीचिंग एबिलिटी है, तो उसको एक्टिंग में लाना मुश्किल काम है, तो ग्रेजुअली टाइम तो लगेगा। और मैंने कल आशिर से बात की, आज आपको जानता है वो, कल हमारी इससे मुलाकात होगी। आशिर आपका वही वाला आशिर है, आसिफ टाउन वाला ही, हमारा असिस्टेंट है ए लेवल्स का। अच्छा जानते हाँ, हैं। उसको मैं आपका CV दूंगा, बड़ा चांस है कि वो निकाल सकेगा। मेरे अभी जॉब इंटरव्यू भी आया है, आज स्कूल पैकेजेस गुलेमत से इंटरव्यू भी है। आइडियाज। अच्छा वहाँ से है, ज़बरदस्त। दिया इंटरव्यू? वहाँ पे CV दी हुई है ना, कल इंटरव्यू होगा। तो जितनी हो जाए अच्छा है, ठीक है। दोनों काम होंगे। ओके करेंगे। मैं थोड़ा आगे मुझे ये चीज़ ऐसे थोड़ा सा जो है ना, इसको इस पे पैर आ जाता है, हम इस पे भी थोड़ी सी टेप लगा लें। हाँ इसको करना। एक दफ़ा मैं और मेरा दोस्त है सर हामिद,